तो हेलो गाइस आप सब लोग वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड। एंड एक बार फिर से रेडी हो क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं हॉगवर्ट्स लेगेसी में, जादू और जादूगरों की दुनिया में, एंड विज़र्ड्स एंड विचेस की भी दुनिया, जहाँ पे भाई बहुत ही अतरंगी जादू और कमाल के एडवेंचर है। सो रेडी रहो हॉगवर्ट्स लेगेसी एंड हैरी पॉटर के न्यू इतिहास में। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे थोड़े से मेन मिशन करके, क्योंकि भाई आज हमें पहले तो स्टार्ट करते हैं अपनी गेम को। एंड थोड़े दो मूव्स मुझे नए सीखने हैं। मैंने असाइनमेंट कंप्लीट कर लिए, मुझे प्रोफेसर्स का आ चुका था ऑलरेडी। तो मैंने मूव्स तो कंप्लीट कर रहे, असाइनमेंट उनके कंप्लीट कर दिए, और हमें बाकी की चीज़ें भी करनी है। और मैंने थोड़ा सा डेकोरेशन चेंज किया है, मैं दिखा देता हूँ। मैंने मेन होल को में से अपने सारे से पॉट और वो सब निकाल दिया है। ये पूरा मेन होल अब डेकोरेशन के लिए बैठा दिया है मैंने। बॉल्स वगैरह और बाकी सारी चीज़ें भी चेंज की है। यहाँ पे आप देख ही रहे हो, यहाँ पे भी चेंज है। अब यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा अपना इंस्ट्रूमेंट सेक्शन बना दिया है। यहाँ पे देखो ये है, यहाँ पे ये रहा। और यहाँ पे मिसिंग तो है, हाँ मिसिंग है। मैंने एक नया लेना था, मुझे लेना है और लगाना है यहाँ पे। तो वो भी करेंगे हम लोग अभी फ़िलहाल के लिए। मैं एक लार्ज वाला लगा रहा हूँ। टिटेनी, मेलो एंड कॉन्फिग्रेस, फ्लक्चुएट, स्टिवरेज, फिर चाइनीज लगा दो, और मैंडरो दोनों लगा दो। और ये मैंने 3 स्टेशन वाला बाय कर लिया है, यहाँ टी शेप्ड पोशन स्टेशन, जिसमें एक साथ 3 पोशन में बना सकता हूँ रेडीली। एंड फ़ायदा बहुत ही है, एक साथ 3 बनते रहेंगे। फिर आप देख रहे हो इस साइड मैंने खाली रखा है, यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे मेरे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग स्टेशन वहाँ पे भी मैं बिठाऊंगा। तो हम देखेंगे नेक्स्ट, वो करेंगे हम तब जब मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पैसे हो जाएंगे। और ये पूरा डेकोरेटिव आइटम्स और ऐसा जोन है। और यहाँ पे और भी चीज़ें मैं मुझे लगता है फ्यूचर में आई थिंक अनलॉक होगी, क्योंकि ये पहले से ही बहुत कम चीज़ है। मुझे इस साइड का लगता है कि सेक्शन शायद खुल जाए, पर देखेंगे हमें अगर लगा तो। और यहाँ पे थोड़ा सा मेरे ट्रॉफी सेक्शंस है, यहाँ पे अलग अलग ट्रॉफीज रखी है। ऐसे तो मेरी चीज़ एक भी नहीं है, पर है। यहाँ पे ये मेंढक वाला है, और यहाँ पे ये ग्लोव्स है। एंड ये वाला सेक्शन खाली है। ये दोनों यहाँ पे स्टैच्यूज मैंने लगाए हैं, तो अलग अलग स्टैच्यूज जैसे खुलेंगे वैसे ही लगाते जाएंगे। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा चिलिंग एरिया में सोफा और वगैरह कुछ लगाना चाहता हूँ। तो वो सब हम लगाएंगे, पर देखते हैं जैसे खुलेगा वैसे ही। गेयर में भी आप देख ही सकते हो मेरे पास है, काफ़ी है। ये नई वाली खुली थी तो वो आज हम ट्राई करेंगे। क्वेस्ट में जाने से पहले फ्लिफेंडो एंड एरेस्ट्रो मूवमेंट दोनों सीखना है मुझे, ताकि भाई अच्छे से वो आ जाए। एंड फाइट में अगर यूज़ करना ही है तो करते रहे। फ्लिफेंडो एंड एरेस्ट्रो मूवमेंट दोनों ही बहुत ही खतरनाक है। और आप में से किसी ने लास्ट एपिसोड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। भाई लास्ट एपिसोड में मैं एक बार बता देता हूँ, लास्ट एपिसोड में भाई हमने प्रोफेसर फिक का मैसेज आया था कि वो लंदन से वापस आ गए, और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी उनको। तो वो मुझे कह रहे थे, पर मैंने उन्हें कहा कि मैंने जो बुक के 2 लास्ट पेजेस थे जो खो गए थे उन्हें भी ढूंढ लिया, और उसकी पूरी स्टोरी मैंने बताई। और जो आप देखना चाहते हो भाई, सो लास्ट 2 एपिसोड मैंने सारे एपिसोड डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए, देख लो फटाफट से फर्स्ट एपिसोड से स्टोरी करना। अगर आपने स्टार्ट कर रहे हो, मज़ा भी आएगा आप लोगों को देखने में। एंड एक नई मुझे चीज़ पता चली है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया था, द हुडी टाइम। तो ये रहा।
हाँ, मैं इसमें हुडी भी अपना जो कैप आती है इनमें वो मैं भी पहन सकता हूँ, पर मैंने कभी की नहीं थी इसलिए। तो वो भी हो गया और हमने फिर प्रोफेसर फिग को मैप चैम्बर दिखाया और मैप चैम्बर में जब बुक रखी तो वहाँ से मुझे एक न्यू लोकेशन पता चली Welcome back. Have you जहाँ से finished your assignments? प्रोफेसर रैकहैम ने कहा कि मुझे कुछ अगर इस एंशिएंट मैजिक को बिल्ड करना सीखना है उसे यूज़ करना तो मुझे उनके 4 अलग-अलग 4 प्रोफेसर्स के टेस्ट है जिनके लिए उन्होंने मैप चैम्बर बनाया था और वक्त आते ही ये सारे खुलने लगेंगे। और हमने कहा कि यहाँ पे पहले ही बहुत सारी प्रॉब्लम हो चुकी है। रैनरॉक का नाम का कोई गॉब्लिन है जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा डार्क मैजिक यूज़ कर रहा है। पता नहीं गॉब्लिन्स कैसे यूज़ कर पा रहे हैं और किसी तरह का डार्क मैजिक यूज़ कर रहा है, वो भी इस एंशिएंट मैजिक के पीछे है। एंड इसलिए हमारे टेस्ट थोड़े से स्पीड अप कर दिए। उन्होंने मेरा पहला टेस्ट कर दिया और मुझे अकेले ही जाना है। बस प्रोफेसर फिग मेरी उस जगह को ढूँढने में थोड़ी-सी मदद कर सकते हैं, बाकी वो आ नहीं सकते। इसलिए वो चीज़ें छोड़ो और हम नया सीखते हैं मूव। Reporting back, Professor. Assignments all finished. Well done. Shows good discipline. Wisdom is a golden snitch, as they say, and you're proving a skilled seeker in that regard. Let us practice our restore momentum. A charm, incidentally, created to stop quaffles from plummeting straight to the ground during a Quidditch match. ओके, क्विडिच मैच के लिए है। Deliberate movements. एरेस्टो मोमेंट भाई ये मेरा ये और फ्लिपेंडो भी मस्त है। Very good. I recommend using your Arresto momentum. That's it. Keep it up. Accio. Wingardium Leviosa. एक्यो और विकार्डियम लेवियोसा अपने आप लगा देता है ये कभी कभी। अब इनके पास नहीं, अब नेक्स्ट का सीखते हैं फ्लिपेंडो। वो एक तरह से कोई रिवर्सिंग स्पेल है किसी ऑब्जेक्ट को आप लोगों को गोल गोल घुमाना हो या ऐसा कुछ हो ना, इसलिए है और ह्यूमंस में भी बहुत अच्छे काम करता है। इन लोगों ने जादू वाले बनाए हैं, डिफेंस वाले भी बनाए हैं और देखेंगे हम लोग और भी। और अभी तो असली वाले फॉरबिडन मैजिक तो स्टार्ट ही नहीं किए हमने बेसिकली, जिनको बैन किया है। Perhaps a hybrid. Bouncy. I've finished the activities you assigned me, Professor Garlick. Wonderful. I hope you gained a greater appreciation for the flora in our lives. I am forever enraptured by it. Just yesterday, I spent hours pruning my self-fertilizing shrubs and flutterby bushes. Didn't realize how long I'd been at it until the sun began to set. Well, if there's one thing I love to see more than my plants thriving, it's one of my students doing the same. Now, ready to learn Flipendo? Chin Yes. up, keep a light grip, and it's all in the wrist. Let's see you give it a go. You will want to focus with this spell. Nothing as mortifying as knocking back a colleague when all you wanted to do was move a few parts. क्योंकि मैंने एक गलती से स्पेस दबा दिया था। Wonderfully done. If you'd like to practice a bit more, you're so here in the green room. Flipendo. Flipendo. Chance, please. Yes, Professor Plants कहीं Flipendo. Incendio. कोई बात नहीं। Well done. I might suggest you practice such maneuvers. यहाँ पे एरेस्टो है, उसकी जगह पे ये चीज़ें हैं काम की है, पर मैं इनको यूज़ नहीं करता हूँ। ये फोर्थ सेक्शन पूरा इससे है। Secluded location. Repulsor. Okay, turn on back the next Flipendo like Ekyo is a 4 spell capable of dispelling violet. मीन्स Ekyo खींचने में काम करता है, फिर ये डिपल्सो जो है Confringo. Depulsor. दूर फेंकने में काम करता है और
लेवियोसा और वो सारे ऑब्जेक्ट है जो उठाने में करते हैं, वैसे ही है ये। ऑब्जेक्ट्स को उठा के आप अलग चीज़ों में करेगा। अब साइड साइड क्वेस्ट में इसके लिए लेवल 30 चाहिए, तो मैं ले आऊँगा और इसके लिए मुझे नई नई स्पेल्स सीखनी है। कुछ और स्पेल सीखनी है। और मैं एरिस्टो मूवमेंट एक जगह पे ट्राई करूँगा। वो है यहाँ पे। यहाँ पे एक दरवाज़ा था जो खुलता और स्पीड में बंद होता था। उस पे मैं एरिस्टो मूवमेंट ट्राई करना चाह रहा हूँ। इससे पहले कि हम अपना फर्स्ट ट्रायल स्टार्ट करें, प्रोफेसर रैकहैम का, मैं रैकहैम का मीन्स उनका कहना है कि अगर आप ये ट्रायल ट्रायल पास कर लेते हो, तो आप एक तरह से उन जादू के बारे में सीख भी पाओगे और उसे विल करना भी आ जाएगा। बट इट्स हार्ड। सो उन्होंने कहा Arresto momentum. Confringo. Arresto momentum. इसके लिए एरेस्टो मोमेंटम नहीं है। Revelio. Arresto momentum. Revelio. Accio. Revelio. मुझे कुछ चीज़ें तो दिख रही है, बट Glacius. ग्लेशियोस भी काम करता नहीं है। देखा, ये ग्लेशियोस भी इस दरवाजे पे काम नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं। Revelio. इसके पीछे है और इसका भी कोई जादू होगा। मैं ज़रूर इसको लॉक पिक या something, ये जो पॉइंट्स दिए उस पे कुछ होगा खोलने का। कुछ तो होगा जो यहाँ पे मुझे रखना होगा। बट आई ऑल्सो डोंट नो। Revelio. Lumos. घोड़े वाली साइन बनी है। Lumos. Wingardium Leviosa. Reparo. Wingardium Leviosa. इसका तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे साइंस बनी है। पीछे क्या बना है वो देखना है। हट हट हट, जल्दी हट। कुछ नहीं है। कुछ और होगा मुझे लगाने का, बट आई डोंट थिंक तो, मुझे याद नहीं है। वर्ल्ड मैप और बैक टू द ट्रीज। इसके लिए तो 11 लेवल ही चाहिए था भाई। मेरा 23 लेवल है। आई ऑल्सो डोंट नो हाउ एंड किलोमीटर्स फार अवे। तो मैं नज़दीक वाले ट्रैवल पॉइंट पे पहले अपने आप को फास्ट ट्रैवल कर लेता हूँ। वहाँ से हम लोग ब्रूम स्टिक पे जाएंगे। बेस्ट एवर इजी। और फास्ट ट्रैवल पॉइंट्स वहाँ के खोलने हैं ताकि नई नई जगह मुझे मिले,
क्योंकि ये मैप बहुत बड़ा है हमारा, इसलिए मुझे हर बार मैं ब्रूम स्टिक से जा नहीं सकता हूँ। एंड इस पे हमें 2 और क्रीचर्स मिलने वाले हैं, ऐसा कहा है। Protego! Revelio! फाइंड द एस्कोडियंस केव, ये वो वाला ही है, एस्कोडियंस केव वाला। वो रबू टावर पे मुझे जाना है, वहाँ पे ही है हमारा फर्स्ट ट्रायल। बट फर्स्ट ट्रायल हम लोग करेंगे आज ही, स्टार्ट करने वाले हैं अभी। और उससे पहले थोड़ा सा मुझे आसपास का एरिया देखना है। Revelio! चलो यहाँ पे पहले ही चेक पॉइंट पे कैंप है। This place has seen better days. क्योंकि वहाँ पे भी है और लाइट हाउस पे भी है। तो ये जाने से पहले थोड़ा सा अपना गैर चेंज कर लेते हैं। मुझे चाहिए कुछ अच्छा दिखने वाला है। तोड़ फोड़। क्रेस्टन एम्बलड। क्रेस्टन वाला चैलेंज इसमें से कहीं पे आएगा। हाँ, चैलेंज इसमें ही आएगा। ये रहा, इसके बाद का ये है ड्रैगनाइट प्रोटेक्टर क्लॉक प्रोटेक्टर एमलैंड एंड बाकी चीज़ें तो नहीं है, तो हटा दो। ग्लव्स भी मैं ये वाले लगा रहा हूँ, बाकी तो ठीक है। ये मास्क, एक सेकंड, वो रेड वाला मिला था मुझे, कुछ चला गया, दिख नहीं रहा है मुझे। रेड वाला एक मास्क मिला था शायद, बेस्ट है ये कपड़े भी। ट्रेजर स्नीकर एंड अनअवेलेबल ब्रूम है, क्योंकि मैं ब्रूम में ही हूँ। ओके, यहाँ पे ये प्रोफेसर मुझे दिखा रहे Intriguing place, Zanbakar's tower. Lovely view, I'd imagine. No idea who कि बाय। the car is, mind you. ये किसी ड्रैगन की खाल से बना है। Over here! तो अगर हम जा ही रहे हैं तो मैं अपना मूव सेट कर लेता हूँ। फ्लिफेंडो नहीं चाहिए। और हाँ, बाकी फ्लिफेंडो और एनारेस्टो मूवमेंट में अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ।
बेसिकली न्यू स्पेल्स है, तो मुझे प्रैक्टिस चाहिए उसमें। बाकी के दोस्त सेक्टर्स हो गए। Incendio! 5-6 में चेंजिंग स्लॉट्स है। Convulso! ओके। एंड स्पेल्स क्राफ्ट में, हाँ चलो स्पेल्स भी है। फ्लेक्सियर और ये दोनों है तो काफ़ी है। We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. Quickly now. डिसअलूजमेंट कैसे होती थी? एफ से नजदीक जाना। Stay hidden and cast Petrificus Totalis. Petrificus Totalis. Well done. There must be something here. Ramrock said so. There must be something here. Petrificus Totalis. Next time I see Fig or that student, I'll give them what they... इनको अलग करना होगा। There must be something here. Ramrock said so. पेट्रिफिकस अलग हो गए। Petrificus Totalis. Revelio. Orders. Directly from Ranrock. These orders indicate that they're after something to do with names. What names? And why here? अबे You draw blood. कहाँ से आ गया? Incendio. Protego. Stupid. Stupid. Revelio. Defendo. Confringo. Depulso. I won't. And utterly pissed. Return me to the ground. Confringo. Defendo. Won't get it. Protego. Stupefy. Revelio. ओके, बंदा पता नहीं कहाँ से आ गया। बट भाई आते ही समझ लिया उसने कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। क्या लूट नहीं छोड़ता हूँ मैं। Can't imagine the goblins know about the trials. They know that something is significant about this place, though. Revelio. या तो उन्हें ट्रायल्स के बारे में पता है, या तो सिग्निफिकेंटली मीन्स उनको लगा होगा कि इस जगह में कुछ तो खास है गॉब्लिन रैंडरॉक को, इसलिए उसने इस जगह में सील लगवाया। यहाँ पे एक ट्रेजर हंटर का भी है। It's more than mere coincidence that we encountered Ranrock's loyalists here.
Revelio. कोइंसिडेंस से ज्यादा ही है. Looks like we found the entrance. It's locked. An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. Okay, so अब आएगा ये ही time मुझे. I wonder who this is. With robes like that, it could be anyone. Merlin. Revelio. Merlin लगता है. Someone was an avid reader. Can't say I'm familiar with many of these titles. Welcome to San Bakar's Tower. Hello, Professor. Did you say Sam Bakar's tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter, though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Command it to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. Okay, याद रखना है वहाँ पे जो. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. Revelio. A reservoir of ancient magic, downstairs, near the entry. Revelio. वैसे बाहर भी कुछ दिखा रहा है. एक सेकंड. Okay. कुछ नहीं, कुछ फोन में अपडेट आया था भाई. फोन का अपडेट मैं कर रहा था और हो गया. और इस बार भाई इन्होंने लाइक वाओ इन्होंने मोड्स ऑफ चेंज कर दिया. ऑक्सीजन होगा 16 is new and high. Gestures, swipe animation, data.
मैं ये सारी चीज़ें बाद में देखता रहूँगा अभी। Revelio. आई नो कि रैनरॉक यहाँ पे आएगा ही, बट सारे चेम्बर्स मुझे लेने होंगे। ये चेम्बर्स भी जो दिखा रहा है वैसे ही चेम्बर्स हुए तो बहुत खतरनाक होगा। या फिर ये हाउस क्वेस्ट है, हर हाउस की एक क्वेस्ट होती है अपनी। Revelio. I've seen this before, in Gringotts and the restricted section. हाँ साहब, ये वॉल्ट है, इन्होंने बनाया प्रोफेसर हैकहैम ने ताकि यहाँ पे टेस्ट हो सके। Impressive. That must have done something. Best have a look around. भाई टेस्ट दे रहे हैं वो दो भाई, पैसे की ज़रूरत है बहुत, अभी तंगी चल रही है यार मेरे को। Revelio. यहाँ से जा नहीं सकते। मैंने मैप चेम्बर को चेंज कर दिया है, पुल वाला हिस्सा है। इट्स नाइस एंड गुड। वापस आते ही कुछ नहीं है। वाह, Revelio. पहले जस्ट लो, और ये सारे झाड़ने वाले हैं तो भाई नहीं रहना। More traces of ancient magic. Something must be different. Revelio. These are never a welcome sight. अरे रे, At least I know what to expect this time. और भी आगे। Capulso! Confringo! Defendo! Confringo! Capulso! Defendo! भाई मेरे मैजिक्स पावरफुल है या Revelio. These look familiar. Accio. Okay. Nice to see you.
What did that burst of magic do? Perhaps I should examine things from both sides of the archway. भाई दोनों तरफ से यहाँ पे जाना है. Revelio. More statues. अबे जाग गए. Levioso. Glacius. Accio. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Defendo. Depulso. Confringo. Incendio. Levioso. Accio. Expelliarmus. Glacius. Expelliarmus. Accio. Confringo. Depulso. Defendo. Incendio. Expelliarmus. ये ले अपना ही हथियार. Revelio. Not making this easy on me. Accio. ओके मुझे शायद समझ में आ गया. इसको उस पार ले जाना है. Revelio. Seems I ought to explore this archway from both sides. Accio. What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. हाँ. कुछ
तो अलग करेगा कि वहाँ था फोर्थ। Accio! Levioso! Glacis! I need to see how the room changes when I move in and out of the archway. रूम चेंज होता है वहाँ पे आता है, यहाँ पे फुल है तब नहीं। Accio! Levioso! Accio! So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. इसके पास ले जाता हूँ और So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. ये तो मैं समझ में आ गया, ऊपर चढ़ना है। ओके Accio! यहाँ से मैं ऊपर जा सकता हूँ। मैं देखूँ ऊपर जाने ब्रिज So ही नहीं है, that's पर it. ऊपर जाने का है। I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. प्लेटफॉर्म को इस तरह से ले जाना है इससे, ताकि वो वहाँ पे आप लोग दोनों साइड जा सको। रेस्ट रूम एंड आगे भी बढ़ पाओ आप। Revelio! देखो टेस्ट ही नहीं है नेक्स्ट में। I'll never get used to these floors. Accio! Glacis! Expelliarmus! Confringo! Defendo! Cabalso! Protego! Confringo! Defendo! Depulso! Incendio! Confringo! Protego! Stupefy! Defendo! Incendio! Depulso! Stupefy! Confringo! Incendio! Incendio! Protego! Confringo! Defendo! Depulso! Confringo! Incendio!
एक भी मार खाए बिना। Revelio. भाई मार नहीं खाई मैंने। और बस Accio. Revelio. Accio. अबे गिरा दिया। गधा। Accio. 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 उस साइड प्लेटफॉर्म ही नहीं है इस जोन में। ये वाला भी गायब हो गया अपने आप। Revelio. भाई साहब यार तो बहुत मस्त है। 23 हो गए मेरे पास 20 चलो होगी शायद गोली मैंने। मैं कांट नहीं वाला अब वापस can't carry more Vigilite potion. थोड़ा खराब खराब चीजें तो है। चीजें मिल रही है बट स्टिल टू
Defendo ये कोर्स में हेल्प करवाने वाला है। अब देखते हैं और Revelio. Beijing guys. Underproof, Focus, Maximus, Adios, Visibility और ये भी डालूंगा शायद। Expelliarmus. मैं यूज कर रहा हूँ ऐसा नहीं। Revelio. नहीं मिल रहा है पोशन ही है चलेगा। Don't like the look of this. Protego! Accio. Glacis. Protego. Accio. Glacius. Depulso. Confringo. Defender. Incendio. Protego. Stupefy. Confringo. Defender. Incendio. Depulso. Confringo. हाँ मेरे लिए ये वैसा थोड़ा सा इजी था पर ये क्या है? Confringo. Defender. Incendio. Depulso. Confringo. Depulso. Defender. Incendio. Confringo. समझ में आ गया अब तो आया। एक चीज आ गई है। Glacius. Expelliarmus. Leviosa. Confringo. Defender. Depulso. Incendio. Glacius. Accio. Leviosa. Leviosa. Glacius. Accio. Expelliarmus. Confringo. Defender. Depulso. Accio. Glacius. Confringo. Defender. Incendio. Depulso.
Superfly! Defender! Repulsor! Confringo! Accio! Liam. Is a pensive guardian at the ancient magic and gate एक और खुल गया. Pensive तरफ था इस. What a relief. Revelio! बस वो चेस्ट मैंने ले पाया उसका तो ब्रेकअप क्या बिल्डेड पोर्शन करके कुछ था बट आई डोंट थिंक कि मेरे स्टोरेज के हिसाब से था पता नहीं आया कोई बात नहीं okay wicked well potion means Another pensive. wicked well potion यानी मेरी हेल्थ हेल्थ फुल है भाई 25 रख सकता हूँ इनके आंसू से नहीं स्टोरी खुलेगी ये चीजें याद रखनी है मुझे okay new form of magic Miss Moho Your को ये ability सिखा रहे to transfigure the world around you is remarkable. oh What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. ये अपने फादर का दर्द निकालना चाहती है जादू से पता नहीं Every year a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. ये अपने घर पे कुछ आज के आने वाली और याद Another memory. passive artifact Now to find a way out of here. nice शायद प्रोफेसर हैम ने ही अपनी यादें इस मूर्ति के जरिए यहाँ पे रखी थी ये दिखने में मुझे वही लग रहा है क्योंकि उन्होंने शायद More रखी हो। crystallized stone. That must be the way back to the map chamber. ये फ्लेक्सियर वाला कुछ मैप में अच्छा करता है बट मैंने आज पहली बार यूज़ किया है मैंने विगमेल पोशन में दिमाग में ही नहीं आया कि वो हेल्थ वाला है
और मैंने खामखा दूसरे पोशंस यूज़ किए। वेल की भी ज़रूरत भी नहीं है। ओह! मैं आ भी गया। फर्स्ट ट्रायल बीइंग कंप्लीट। रुकवुड आ गए, प्रोफेसर रुकवुड। What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir, and this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. We saw you in the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that Pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last Pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of San Bakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then, Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the Pensive. Before the witch from the last Pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next Pensive provides more context. For now, we should learn what Ramrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Serona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies. Yes, sir. हाँ, स्टडीज भी भूलनी before नहीं you है इसके go- साथ। यस, प्रोफेसर रुकवुड बात करना चाहते हैं। Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path. Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. सो हमें कुछ गॉब्लिन्स के बारे में भी पता चला कि यहाँ पे कुछ गॉब्लिन्स भी हैं। और बहुत सी चीज़ें पता चली है जिन्हें हम और भी ज़्यादा डीप में देखते रहेंगे एंड उन्हें शैल भी चेकआउट करते रहेंगे। और फॉर नाउ अभी तो हमने ज़्यादा चीज़ें सीखी नहीं है एंड आई थिंक इसका जादू तो बहुत चलता रहेगा। I should ask Sir... Spectacular news! The broom upgrade's ready. Ha! Stop by the shop when you can. ओके, ब्रूम अपग्रेड आई है तो पहले ब्रूम अपग्रेड के बारे में सोचते हैं। और क्वीज में मेरे पास भाई बीस्ट क्लास, ओ माय गॉड, अल्हो मोहरा, ये भी सीखना है। डिपल्स स्पीक टू द सीनोरा इन द थ्री ब्रूम स्टिक्स, रिक्वायर्ड लेवल 12 एंड डिपल्स वो भी आना चाहिए। हेल्म ऑफ कटा,
वॉच एज अ ब्रूम अनाउंसमेंट फ्रॉम LB Weeks। हाँ, ब्रूम अनाउंसमेंट तो पहले चाहिए भाई। मीन्स मैं ब्रूम अनाउंसमेंट आज कर रहा हूँ, तो आ गया है तो ट्राई करता है। एलोमोरा भी सीख ही लेता है, इससे लॉक्स खोलने में काम आता है। और अब एलोमोरा आ चुका है, तो I एक hope you will come and see me about a pressing and highly confidential matter at your earliest convenience. I believe that we may be able to help each other. हाँ ज़रूर। Please see me after class once you have completed the tasks I've set for you. I would like to teach you Descendo, useful for pulling objects to the ground. डिसेंडो मैंने सीखा है, पर प्रोफेसर कह रही है आपको सिखाना है। नया डिसेंडो में कुछ अलग होगा शायद। एक्यो टैकी डिसेंडो एक्यो खींचने को वाला होगा, और डिसेंडो आई थिंक। और ये कपड़े भी मस्त है। तो मैप वाला भी अब ख़त्म होने को ही है, नहीं काफ़ी ज़्यादा है, पर वो ख़त्म हो जाएगा, उसकी चिंता मत करना, मैं देख लूँगा। Welcome back. I've arranged a special price on the broom upgrade for you. I truly appreciate all of your help. अबे तू प्राइस भी लगा रहा है, और प्राइस क्यों लगा रहा है भाई? औजार है, मैं दे रहा हूँ भाई तुझे। You'll be thrilled with that broom, I promise you. I must tell you, Arthur Vogsmead's been by the shop asking about rumours of a broom upgrade. Without the information you provided, my work would have taken twice as long. Thank you again. It may sound ambitious, but I've already begun work on another upgrade, more difficult to perfect than the last. I wondered, would you be interested in joining forces again? There's another course near Irondale that Miss Reyes has mastered. If you were to test this first upgrade there, it may help me as I develop the next. Oh, you'll consider it, won't you? Okay. Take a second. Sounds as if you're really outdoing yourself. If I'm able to help, I will. Thank you. I know this recent success was only the beginning of what I can do for Broom Flight. Report back as soon as you can, and we'll be off to the races. पता नहीं, स्क्रीन मेरी में मीन्स आपको तो परफेक्टली लॉन्च आउट होगा शायद। कलेक्ट ट्रोल वॉकिया डिसेंडो, ट्रोल वॉकिया 1 and collect Dipulso on the last Dipulso. Thank you. नए वाले भी मिले, छोटी मोटी चीज़ें भी मिली, एक आर्टिफैक्ट मिला है, एंड बेस्ट ऑफ ऑल हमारे पास ब्रूम अपग्रेड कॉस्ट आ चुका है। Prefer the broom of those with a high temperate. You can upgrade your broom by this. और फर्स्ट अपग्रेड क्या था ये दिखाया भी नहीं मुझे। मीन्स अपग्रेड से होगा क्या? अब 400 ही है, तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। Off to the races then. रेसिस है तो रेस करेंगे हम लोग, एंड मैं आई होप अब देखो अब हमारा काफ़ी हो चुका है, तो मेन स्टोरी में जाने से पहले मैं आज थोड़ा रेस वगैरह हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। आज मुझे सीखना है गो टू द बीस्ट क्लास, नहीं एलोमोरा सीखना है, क्योंकि एलोमोरा में लॉक्स खोल सकता हूँ,
और 2-3 चीज़ें कर सकता हूँ। और नेक्स्ट एपिसोड में भाई हम पूरा का पूरा फ्री रोम करेंगे। साइड मिशंस एंड फ्री रोम होंगे, मेन स्टोरी पे मैं बढ़ूंगा नहीं इसलिए। और बी रेडी, क्योंकि नेक्स्ट मिशन में आपको और भी खतरनाक चीज़ें देखने को मिलेगी नेक्स्ट एपिसोड में, सो रेडी रहना। Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologize if I seemed a bit unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. And from what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. ओके, दिन से रात होती है तब तो मुझे ना देखना है। भाई चमक रहा है। We are fortunate to... Now, if you wouldn't mind humouring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. Oh, odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed. Which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those cute statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a demiguise. A demiguise? Yes! Terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip out Lumos. as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Why me? A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of two statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. I'd be glad to help you, Mr. Moon. Oh, I knew I could count on you. Second, man. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alahomora, that's how. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh! I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Good luck. Oh, and thank you. Okay.
हेलो मोरा, यही तो मुझे सीखना। Hello, Hamora. अब भाई इसमें लॉक मुझे ही खोलना होता है। तब तक देखो, अब इसमें ये मूव कर रहा है, हो गया। ग्रीन वाले में बाहर साइड का सर्कल मूव करना चाहिए, रेड में अंदर का सर्कल। You're in. Remember, use a disillusionment charm so no one claps eyes on you. This is a Revelio. The castle, after all. अबे यार, मून ग्लैड विंड्स इन ऑर्डर टू लर्न हायर लेवल ऑफ, और भी चाहिए मून ग्लैड विंड्स। मून ग्लैड विंड मुझे ढूंढना हो गया। Hello, Hamora. देख रहे हो? हो गया, ऐसा ही होंगे। दोनों मुझे रेड वाला और ग्रीन वाला सर्कल सेट करना है, जिससे मूव करने लगे, और मूव हो गया तो समझ लो। Revelio. ये फैकल्टी रूम है, मीन्स यहाँ पे सारे प्रोफेसर्स वगैरह सोते रहते हैं। अब एलोमोरा आ गया है, मीन्स मज़ा आएगा। और ये मुझे ढूंढने नेक्स्ट एपिसोड में हम करेंगे ऐसा। Revelio. How are your students getting along this year? Oh, poorly, I'd say. Is that प्रोफेसर वीजली एंड क्या चीज़ है भाई? प्रोफेसर ब्लैक, हेडमास्टर ब्लैक एंड प्रोफेसर वीजली। Revelio. This must be the prefect's bathroom. They're saying that Ranrock's loyalists are preparing for a rebellion. Brute. Always mucking about, stirring up trouble. Perhaps Ranrock and Hyssop would if the Ministry would allow them to have one. One of those goblins comes near me, I'll hand him his hat. Or help. Revelio. Anyway, I'm not afraid of a goblin rebellion. My match is superb. What trickery are you up? मैं गलती से मैंने कर दिया। ट्राई अगेन। और यहाँ पे मुझे आना है तब जब कोई प्रिफर्स ना हो। प्रोफेसर डी टाइम पे नहीं होते। Revelio. मैंने वो चीज़ें तो ले ली। Revelio.
अबे इधर आना Revelio. 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 इसको मैंने अपनी तरफ खींचा कोई स्कीपिंग होता तो मैं इसको सुला देता Not at the moment, no. Send them my way, though. Well, I suppose I should begin my rounds now. I suppose Professor Black knows best, but the students are terribly disappointed about Quidditch being cancelled. Galleons on Hufflepuff this season. Hufflepuff? Not Ravenclaw? I know when I see a winning bet, and Ravenclaw would not have been... Revelio. I'm Hufflepuff. Flying about and the golden snitch. Rather a lot like that, isn't it? अब आएगा भाई फैकल्टी रूम में जाने की इजाज़त नहीं है मैं हूँ नहीं इसलिए Revelio. लेवल 3 को भी ऊपर नहीं नीचे जाना है अच्छी बात है नीचे जा रही है तो अच्छी है चाबी वैसे 3 ही बचे हैं मुझे पता है 2 यहाँ पे और एक कहीं और है अबे मिस हो गया इस बार भी अबे यार मिस हो गई मेरे से मिस हो रही आज तो मैं तोड़ तोड़ के ऐसे ही लगा दूँ तो मिल गया Revelio. Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Oh, goodness! You're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I
first suspected Peeves, he drove the previous caretaker, rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Hogsmeade, does it? No. I am determined, with your help, to discover the identity of my tormentor. For sure, I am determined with your help to discover the identity. It's definitely intriguing. I'd like to help you solve this mystery. You, my friend, are a gentle person and a scholar, and I have something to offer in exchange for your assistance. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. Understood. I shall keep an eye out. I appreciate that. Okay, जितने ज़्यादा मैं statues इनको दूंगा. Oh, and I knew you were the one to ask for help. Keep at it so we can solve this mystery. We are fortunate to have a student brave enough to eradicate the Demiguy's figurine menace. अब अलार्म हो रहा खुल चुका है, तो वक्त आ गया है. और भी स्पेल्स होंगी, अलग अलग और स्पेल्स की एक खोलनी है मुझे. और वो दरवाज़ा जो फट से बंद हो जाता था यहाँ पे देखो, वो भी है खोलना. Aloha Mora. साथ में ही होते हैं दोनों मैक्सिमम टाइम से. अब थर्ड और सेकंड लेवल का जो खुलेगा ना. Revelio. वो देखने जैसा होगा. Confringo. Revelio. और ऊपर जाने के लिए यहाँ पे स्टेयर्स है, पर काफी अलग. बस एक और मुझे मिलेगा. मैं अभी ढूंढ रहा हूँ, आज ही ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मुझे देखना है इसका लेजेंडरी चेस्ट कहाँ पे खुलता है. That's it. लेजेंडरी चेस्ट कुछ आइटम है, लेजेंडरी आइटम, जो एक और कॉइन मुझे पता है कहाँ पे है. फैकल्टी रूम में 2 कॉइन्स और है. मीन्स एक मैंने निकाल लिया और एक ही बचा है अब, तो वो मैं निकाल लूँगा सुबह में. Confringo. Defendo. Incendio. Flipendo. Glacius. तो भाई कैलेसियस काम कर गया. कैलेसियस ही यूज़ करना है मुझे. हर बार हर जगह पे अलग अलग गेट को रोकना है और खोल के देख लेना है.
Accio. Flipendo. Levioso. Glacius. Flipendo. Confringo. Glacius. Aloha Mora. अब तो बैठ के ये वाले दरवाजे भी मैं खोल लूंगा। ऐसे सारे लॉक वाले मैं हॉग्समीड में खोल के देखूंगा। Lumos. Revelio. हैलोवीन ब्रो, हैलोवीन आ रहा है। Lumos. अंदर के साइड पे गार्डन में है, गार्डन में। Revelio. तो आज का एपिसोड यहीं पे रखते हैं एंड मैं थोड़ा सा साइड स्टफ कर रहा हूँ Lumos. और अलग अलग चीज़ें देखूंगा, साइड स्टफ करूंगा और मज़े करूंगा। नई नई चीज़ें जैसे ये देखो गेट खुल गया। तो यहाँ पर कहीं पे तितली होनी चाहिए। कि ये वाला एक गेट आता है। Revelio. और शायद किसी ग्लिच की वजह से तितली भी ना हो। और ये रही। Lumos. अब तितली उस साइड नहीं थी, जहाँ दिखाया था उसी एरिया में होती है। ढूंढना होता है बस आपको। और हॉगवर्ट्स पे ये पेज हुआ कितना पेज हुआ। ओके, हॉगवर्ट्स के सारे पेज आई थिंक आ गए। हॉग्समीड में अभी 2 बचे और हॉगवर्ट्स के काफ़ी पेजेस हैं। फील्ड गाइड के कुछ पेजेस आ चुके हैं। एलोमोरा 2, जिसके लिए मुझे 9 ग्लोब स्टोन्स चाहिए।
ऐसे और 9 चाहिए जैसे हमारा 2 और 3 चाहिए, दोनों के लिए मैं ढूंढता रहूँगा। ऐसे 16 मीन्स 15 मैंने ढूंढ लिया, 16 लास्ट एक है, वो भी ख़त्म। और फिर असाइनमेंट भी मुझे कंप्लीट करना है। डिपल्सो डिसेंडो, ये डिपल्सो मुझे सिखा रहा है, डिसेंडो भी। डिपल्सो में कुछ अच्छा ही होगा। स्पीक टू सिनोरा इन द 3 ब्रूमस्टिक्स। डिपल्सो रिक्वायर्ड है, डिसेंडो सिखा रहा है। डिपल्सो मेरे पास है। मूनस्टोन का देख लो। स्पीक विद एमिडिया रेयाना कंपटीशन में ड्राइंग क्लास की नेक्स्ट अपग्रेड से पहले 20 क्लास और अलग अलग चीज़ें हैं, हम करते रहेंगे। एंड वॉच करना मत भूलना। और एक क्विज अब सॉल्व हो गई है। तो बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।